God's card as angels, Archangel Michael, spirit guides, spirit guides. Please tell us, is there any message or what Sushant feels about the Bollywood now? Any thoughts from him? What he feels about the Bollywood? Let's see. Let's ask the angels. Okay, we have the card. Okay, the wheel has turned upside down. Wow, what a fantastic guidance, no? बॉलीवुड का जो गुड लक चल रहा था उन लोगों के साथ, जो एक गुड लक चिपका हुआ था काफी सालों से, वो अपसाइड डाउन हो गया. कहने का मतलब अगर आप ये कार्ड देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये व्हील है एंड दिस इज अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड एंड देयर फॉर्च्यून इज नाउ अपसाइड डाउन, राइट? एंड हाउ स्पॉट ऑन इज दैट. उनकी दुनिया उलट गई है, उनकी दुनिया बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गई है एंड देयर गुड लक इज ऑल्सो अपसाइड डाउन. द व्हील हैज टर्न्ड इन दी opposite direction for them, and Sushant is recognizing this. It's been a long time in the making. Okay, should we keep here, should we keep here, should we keep here? All right, Ace of Wand, they definitely are, you know, उनको जरूर एक Ace of Wand, एक न्यू बिगनिंग की एक न्यू बिगिनिंग का बॉलीवुड को जरूर इंतजार है एट अ स्पिरिचुअल लेवल, बिकॉज द होल, आई मीन व्हेन यू आर, people have literally burnt the Bollywood with their arrogance, to burn their arrogance of course, to ashes with all the films flop होने के कारण. वो public has burnt Bollywood to ashes. और अब अगर एश से आपको कुछ बनना है, then अगर आपको एश से, you know, if you have to rise from the ashes, then you have to rise like a phoenix only. and phoenix के लिए आपको Ace of Wand की जरूरत होती है. Ace of Wand जो कि एक सोल में, क्योंकि बॉडी तो जल चुकी है, you know, the body is turned into ashes, sorry, so only a spiritual change, only a spiritual inspiration can make them rise like a phoenix. वो कहने का मतलब है. Let's keep it here. ये वाला कार्ड तो काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. What is it? Okay. Now what he feels about the Bollywood. Of course उनकी दुनिया अपसाइड डाउन हो गई है, उनका लक अपसाइड डाउन हो गया है. Nothing is going their way. And while they want to grow, you know, they are really intent on making things grow once again. Seven of Pentacles is all about growing something. यहाँ पे अपसाइड डाउन है, burnt into ashes, और यहाँ पे बॉलीवुड क्या कर रहा है कि फिर से कुछ ग्रो करने की कोशिश कर रहा है. यहाँ पे देखो तो ये this little plant is a very little plant. It is not a big huge plant. However, the Bollywood was very big or huge industry. लेकिन अभी वो फिर से they have to, you know, start from scratch. अभी he is basically acknowledging कि how they are tending to their small plant कि grow करे, उनका money grow करे and all that. But they don't know how to grow. Do you see this card? They don't know how this will happen. They want to grow their money tree, but they don't know. They want to grow their finances. Film hit हो, हर चीज फिर पहले जैसा हो जाए, लेकिन they are clueless as to how this tree will grow. और यहाँ पे देखो बैकड्रॉप में एक बड़ा सा पेड़ है यहाँ पे, विच इज वेरी ह्यूज, बिग, डेंस, ऑल ग्रीन. तो ऐसा लग रहा है जैसे कि दे आर थिंकिंग कि फिर से जो ये पेड़ है ना, इतना बड़ा पेड़ कब होगा. कहने का मतलब है कि the way Bollywood used to be all happy dappy, everything going their way, people crazy for them, minting money on box office, फिर से वो कैसे होगा. अभी तो ये पेड़ इस तरह का है, right? It's still growing. I mean, it's not growing, but they want it to grow. They are tending to it. They are taking every little care of whatever they are making कि फिल्म सब सही हो हर तरह से. अब जैसे आप इस मूवी को ही देख लो, पठान को, कैसे हर चीज का केयर किया गया है कि बी इट ग्लैमर और बी इट वट एवर. आई डोंट थिंक इट इज ग्लैमर, इट इज मोर ऑन द वल्गैरिटी साइड, बट नेवरदलेस दे आर नॉट लीविंग एनी स्टोन अनटर्न. यहाँ पे देखो स्टोन्स है ना, दे आर नॉट लीविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड
to force people or to tempt people to come and watch the movie in the cinema. यहाँ पे है, लेकिन इनके जो ये जो इनका जो है ना, these कटोराज आर एम्प्टी नाउ, उनके भी हाथ में कटोरा आ गया है, ऐसा लग रहा है. एंड दे आर वंडरिंग कि ये पेड़ क्या कभी जैसे हुआ करता था ग्रीन, क्या कभी वैसा होगा. तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट काफी हुआ है बॉलीवुड को, ये सुशांत बताने की कोशिश कर रहा है. I mean, this is the message, and they are like, they really want this wheel to turn finally the other way, क्योंकि काफी अब 2 साल से बॉलीवुड का जो सितारा है गर्दिश में है, द फॉर्च्यून उनका नीचे आ गया है, एंड दे रियली प्रेइंग. ऐसे देखो तो ऐसा लग रहा है कि दे आर लुकिंग एंड प्रेइंग एट दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून कि कब तुम ये फिर से उनके फेवर में घूमने लगो. ऑल राइट, यहाँ पे भी देखो, इट्स लाइक only when you start earning the money, only when your business works, only when you make the money on the box office, it's more like you keep the box office registers ringing, then only people will, तभी आपका कोई वैल्यू है. आई मीन then only there is आपका कोई वर्थ होता है. अदरवाइज जब आप when you can't make the cash register ringing, when you can't go, तो फिर you are not, तो फिर काहे के हीरो. इट्स मोर लाइक दिस. एंड देन यहाँ पे 6 of cups in reverse है. 6 of cups in reverse. Let me push this here, guys, तो आप देख पाओ अच्छे से कि क्या है और क्या नहीं है. 6 of cups in reverse. What is this? This is definitely thinking about the past, जहाँ पे past के वो पेड़ को भी देख रहे हैं. When the Bollywood industry used to be so luscious, dense, growing, and very fulfilled and full-fledged होता था. But what does this mean? This is what he feels about. It's more like, it's not like it is his feeling, but he's just kind of putting everything what is happening with Bollywood right now in a nutshell. It's nowhere I see that it is his, what is his thoughts about it. जैसे कि इसके साथ जो भी हुआ बॉलीवुड के साथ, it is basically depicting all those things, जो कि हमें पता भी है, मगर are we getting any insight from like what is his thoughts on this, his personal thoughts? वो तो यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है. हालांकि दिस कार्ड this is a card of past. They are definitely into the past, but let's see, maybe here we can get some insight as to what could be Sushant's thoughts on Bollywood now. Sushant's thoughts on Bollywood now. Let's see. डॉग का कार्ड यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. एंड दिस बी लॉयल टू वॉट यू लव. बी लॉयल टू वॉट यू लव. यहाँ पे भी डॉग है, यानी कि लॉयल्टी में कुछ कमी की तरफ इशारा है ना. दिस कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस कि वी हैव अ डॉग का कार्ड हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो स्पेसिफिकली coming out. And dog is a spirit animal which is about being loyal. And यहाँ पे ये ब्लॉक्ड है, यानी कि बॉलीवुड के लॉयल्टी के बारे में कुछ इशारा है. तो बॉलीवुड की लॉयल्टी किसके तरफ है ये तो हम सब जानते हैं, राइट? आई मीन जानते हैं, अब हम जान गए हैं. तो बी लॉयल टू वॉट यू लव. Be loyal to your craft, be loyal to your skills, talent. But यहाँ पे they are doing
a different propaganda altogether. They are not loyal. तो loyalty के बारे में कहीं यहाँ पे इशारा है, you know. Loyalty. Okay, let's see. Is there any message coming? Be here now. Okay. And this is Spirit has your back. Spirit doesn't has your back. And at the back of the deck we have lay a solid foundation. और यहाँ पे हमने बात की कि कैसे Bollywood as an industry is burned to ashes kind of thing हुआ है उसके साथ. और if it has to rise from its ashes, then it will need to have some spiritual inspiration of Ace of Wand. Okay. कुछ बेसिक चेंजेस उनको करना पड़ेगा उनके लेवल में. मटीरियलिस्टिक कॉस्मेटिक चेंजेस करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि पब्लिक को सब पता चल गया है. तो बी हियर नाउ, दे आर लाइक वेरी लॉस्ट, दे आर वेरी लॉस्ट. यहाँ पे भी लॉस्ट है, यहाँ पे दिख रहे हो आप. और यहाँ पे क्या आया है कि स्पिरिट हैज योर बैक, इट इज ब्लॉक्ड. दे नीड टू मेक सम स्पिरिचुअल, यू नो, एक दे अलाउड देयर स्पिरिट टू गेट करप्टेड, you know, not only their body, mind, emotions, loyalty. They really, you know, they kind of sold their loyalty, and they kind of sold their loyalty, and there is a need of deep cleansing is what I am getting, to lay the solid foundation of this industry once again, जो कि बिल्कुल upside down होके आप बोल सकते हो कि समुंदर में. This is interesting. While this is sky, I think, or you can never know what is this. This just felt like an ocean to me, and Bollywood sees Sushant as ocean. So they will need a solid foundation, a thorough introspection of their soul and their priority and misplaced priorities to get back in the game, to earn the loyalty of the audience. Maybe they have lost the loyalty of the audience because their loyalty was misplaced. तो ये सारी चीजें हैं. Okay. I am the dreamer of my dream. I am the dreamer of my dream. I am the dreamer of my dream. So it's somewhere, you know, the message from him it's more like a message. It's not his thoughts on them. यहाँ पे लगता है कि सारी हीलिंग हो चुकी है. इट्स नॉट लाइक बेसिकली जो बॉलीवुड में अभी हो रहा है ना, वो वही सारी चीज़ें हमें कार्ड्स में भी पता चल रहा है. कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड का ये हो जाए वो हो जाए. जो जैसा है वैसा हमें पता चल रहा है. तो यहाँ पे पूरी तरह से हीलिंग जो सोल की हो जाती है ना, जहाँ पे कोई रिमोर्स रिग्रेट नहीं है, वैसा लग रहा है यहाँ पे. And it's more like find the inspiration, and you cannot have inspiration without a dream. You need to have a desire to find an inspiration, and then you will probably, you know, be led. All right guys, so let's move on to the next question. हम पूछेंगे what he feels about his justice, you know, कैसा चल रहा है क्या नहीं. Any message coming from him? Is there any message, your angels, from Sushant about his justice? What he feels about his justice का प्रक्रिया. वाओ, जस्टिस की बात कर रहे थे हम, और जस्टिस का कार्ड भी आया है, बट इट इज ब्लॉक्ड गाइस. ओके, चैरियट का कार्ड है एंड द वर्ल्ड इन रिवर्स है, एंड वी हैव एस ऑफ कप्स. एस ऑफ कप भी ब्लॉक्ड है. So what is happening? What are his thoughts about his justice? Okay,
We'll just take these cards क्योंकि these are the only three cards that jumped out. Okay, as we were asking about what are his thoughts about his justice. Okay, Ace of Cups से I think this is somewhere dissatisfaction हम बोल सकते हैं कि this is a dissatisfaction. यहाँ पे भी justice का कार्ड आया तो है but ये blocked है. तो yes, while it is happening, it is moving forward strongly but yet it has not reached the world. Now कितना beautiful है कि यहाँ पे the world कार्ड है जो कि एक लॉन्ग प्रक्रिया जो होती है उसके कंप्लीशन की तरफ इशारा करता है या फिर कंप्लीशन होने का कार्ड होता है. और यहाँ पे क्लियरली आया है कि इट इज़ नॉट हैपनिंग, इट हैज़ नॉट हैपेंड येट. सो येस, वाइल टू हॉर्सेस, ये SSR वॉरियर्स हैं और ऑल द people who are fighting for Sushant's justice, they are on the chariot, they are moving towards it, but यहाँ पे there is something like what he feels about it, that yes, you're going strong justice के लिए, people are working. Actually यहाँ पे chariot का card speaks a volume. It is, sorry, all right, it speaks a volume about the warriors. Like warriors एक क्योंकि chariot पे एक warrior ही बैठता है, right? And he is acknowledging the warriors and how strongly they are moving towards how strongly they want the completion, closure of Sushant's justice, Sushant's fight for justice. But yes, यहाँ पे completion है भी और नहीं भी. It's something like that, while yes, there is a complete full circle, but we have not completely achieved it. तो it's more like कि what he feels about his justice, क्योंकि ये अभी तक का justice के बारे में है, तो it is definitely like it's not happened yet. And Ace of Wands is somewhere like heart is closed, as in heart is closed with justice. Let's see. I think I will take this card here. What are his thoughts on justice, angels? What? Okay, wings. So let's take these two cards here. Wings and stars. So what are his thoughts on justice? This is a 5 and this is 8. Wings, you have never needed those wings to, you never needed those wings to fly. और यहाँ पे है stars. You can manifest your every wish. Okay. You never needed those wings to fly. You never needed those wings to fly. Ace of Cups. Stars, you can manifest what you can manifest your every wish is definitely telling about justice. अगर हम manifest करना चाहते हैं and we are moving strongly even though we have not achieved it yet, or maybe we cannot achieve it completely. But yeah, keep on moving strong. You can achieve, you never know. Even though right now ऐसा लग रहा है कि हमने जस्टिस फॉर सुशांत 2.5 साल हो गए, लेट भी हो गया, पर इतना लेट तो लगता ही है. आप कोई भी केस उठा के देख लो. And we feel that it's not, we have not reached the closure, conclusion. But yes, is it possible? Yes, it's telling that it is possible. और यहाँ पे अगर है what he feels about his justice, it's more like he never needed this justice. ये जो justice हमारे यहाँ पे 3D में justice होगा, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. I'm not talking about specifically in सुशांत केस. Any case में देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो डाउट करते हैं कि सुशांत को justice मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर वो डाउट करते हैं तो वो क्यों डाउट करते हैं? बिकॉज दे हैव सीन अपटीन नंबर ऑफ केसेस जहाँ पे लोगों को जस्टिस नहीं मिलता है या फिर काफ़ी लेट से जस्टिस मिलता है.
तो ऑब्वियसली दे फील कि जस्टिस नहीं मिलेगा. एंड हियर एक उस तरफ इशारा है कि देयर इज अ कॉस्मिक जस्टिस अबव द मटीरियल जस्टिस. हमारे जो कोर्ट्स हैं, अगर वो नहीं भी कैन ब्रिंग द थिंग्स फुल क्लोजर, बट देर इज अ कॉस्मिक जस्टिस है, यूनिवर्सल जस्टिस है, बिकॉज यूनिवर्स इज कम्प्लीटली बैलेंस्ड. और मटीरियल वर्ल्ड में अगर जस्टिस नहीं भी मिले तो इट्स ओके, बिकॉज ही नेवर नीडेड दैट. he had his own wings which nobody could see, because you understand, अगर उसको इतना ही जस्टिस की चिंता होती तो सबको पता है कि जस्टिस नहीं मिलता है इन सारे केसेस में. इन सारे केसेस का मेरा मतलब नहीं है, ये नहीं बोलना चाह रही हूँ मैं बोलना चाह रही हूँ कि इफ़ यू आर सो बॉदर्ड अबाउट कि what I'm trying to tell you is कि he didn't do this so that he could get the name and the fame that he is getting. He didn't do it to get something in return. And that is why he has achieved his sole purpose by doing what he wanted to do. And there is an internal satisfaction. Okay? And therefore he never needed those. अगर मिल जाए जस्टिस तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेल. एवरीबडी लाइक या जस्टिस मिले तो अच्छी बात है, लेकिन क्या सुशांत को अपने लिए जस्टिस चाहिए? ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, बिकॉज ही नेवर नीडेड दैट. ही जस्ट वेंट विथ हिज वॉट ही वॉन्टेड, विथ हिज सोल्स he went with his soul's call. He went with his soul's call. फिर क्या होगा नहीं होगा, he didn't bother. तो यहाँ पे उसने विंग्स अपने छोड़ दिए हैं. He left his wings. He is flying. And they could only cut his wings. They couldn't cut his spirit. They couldn't stop him from flying high, kissing his dreams, following his soul path and all that. So justice is for the material world, not for his soul, because his aim was more to achieve what he wanted to achieve. और वो उसने अचीव कर लिया है. But then why is this ace of cup upside down? Is it telling us something else? Ace